A'udhu billahi minash shaitanir rajim. I seek refuge with Allah from the rejected Satan. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the specially merciful. Welcome students. We're going to start today's lecture. हम आज का लेक्चर शुरू करने लगे हैं. The title of today's lecture is Active and Passive Voice. आज के लेक्चर का जो टाइटल है वो Active and Passive Voice है. Are you getting me? Okay. Now, people, can you hear me clearly? Hello, excuse me, can you hear me? Can you hear me? Yes, sir. I see. Okay. Good. Okay, now, please mute yourself. Active and passive voice. You can see the pictures, active voice, passive voice, short way, long way. What does it mean? क्या मतलब? I'll teach you just after some minutes. Okay, now, in any language, okay, a conversation consists of sentences. All right? क्या बताया जा रहा है कि किसी भी जुबान में गुफ्तगू मुश्तमिल होती है जुमलों पर. Okay, we know that. What we know? हमें क्या पता है कि when alphabets are connected, okay, a word is formed which has a specific meaning. जब अल्फाबेट्स जुड़ते हैं तो लफ्ज बनता है which has a specific meaning, जिसका एक मतलब होता है. And when that words enters our ear, our mind catches it and we get to know about something. जब वो साउंड होता है लफ्ज का हमारे कानों में दाखिल होता है, हमारा दिमाग कैच करता, पता चलता है अच्छा किसी ने ये कहना चाहा. Okay, now, and when the words are connected, a sentence is formed. When the sentences are connected, okay, conversation is formed. जब जुमले जुड़ते हैं तो गुफ्तगू वजूद में आती है. It could be in written manner or spoken manner. चाहे लिखने के अंदाज में, चाहे बोलने जाने के अंदाज में. Okay, so a conversation consists of sentences now which are uttered by the speaker. जुमले पर मुश्तमिल होती है गुफ्तगू जो कि अदा किए जाते हैं, स्पीकर की जानिब से जुमले अदा किए जाते हैं. And these sentences are just of two kinds, active and passive voice. जितने भी जुमले बोले जाते हैं while making conversation are of two kinds. दो तरह के होते हैं, दो अकसाम के होते हैं. Are you getting me? Okay. Active voice, one kind is active voice and another one is passive voice. जुमला या तो एक्टिव होगा या पैसिव होगा. Your parents are making conversation with each other. आपके वालिदैन आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं. You are English learner, you people are linguists, so you can see, okay, you can see when they speak the sentences, okay, half of them are active voice or passive voice. उनमें से आधे क्या है, एक्टिव होंगे, आधे पैसिव होंगे. Okay, you need to see. When I used to learn English language, okay, when I used to be at the institute, so when people make conversation, even in Urdu language, I used to judge people, how they use the words, how they speak the sentences to express their thought and idea. मैं जज करता था लोग किस तरह अपनी सोच को, आइडिया को बयान करने के लिए लफ्जों का चुनाव करते, even in Urdu language. Okay, when you create the concept of any language, okay, consequently the other language is really easy for you automatically. जब आप एक लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो नतीजन दूसरी जुबान सीखना आपके लिए आसान हो जाता है. Are you getting me? Okay, whenever I attend the lecture of Arabic language, एक आम लर्नर सीखता है 10 दिन के अंदर, मैं 5 मिनट के अंदर वो सीख चुका होता हूँ. Because I know the phenomena of learning a language. चूंकि मुझे पता है कि एक जुबान कैसे सीखी जाती है. Are you getting me? Okay, being a linguist. Okay, now, so in a conversation, as per research तहकीक के मुताबिक, okay, around 60% of passive sentences are used to convey a message. पूरी गुफ्तगू में, पूरे के पूरे लेक्चर में, पूरी की पूरी तकरीर में, एक पूरे खिताब के अंदर, 1 घंटे का लंबा चौड़ा खिताब, उसके अंदर आप देखेंगे कि 60% पैसिव बोला जाएगा.
मैसेज को कन्वे करने के लिए, आगे उसकी इशात उसको पहुंचाने के लिए आप देखते हैं कि 60% आप क्या देखेंगे कि पैसिव यूज होता है। कितने परसेंट? द रिमेनिंग इज 40%। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, 40%, 60%? 60%। दो शेयर्स है, कौन सा लोगे? 60% लेंगे भाई, 40 क्यों लेंगे? ज्यादा पैसे चाहिए ना, ठीक है। सो तो 60% क्या है, पैसिव यूज होगा किसी भी गुफ्तगू के अंदर। ओके, ऑन द अदर हैंड, दूसरी जगह एक्टिव सेंटेंसेस आर यूज्ड जस्ट 40%। एक्टिव सिर्फ 40% यूज होता है। बट एट स्कूल जस्ट एक्टिव वॉइस इज टॉट। ओके, पैसिव वॉइस इज आल्सो टॉट, बट इट इन नॉट दैट वे। उस अंदाज में नहीं पढ़ाया जाता जिस तरह एक्टिव पढ़ाया जाता है। ओके, एक्टिव कैसे पढ़ाया जाता है, वी नो। ओके, नाउ comparison between the active and passive sentence. Let me tell you, you say passive voice, passive sentence, passive structure, there's no difference. कोई फर्क नहीं है, सेंटेंस कहे, वॉइस कहे या स्ट्रक्चर बोले, नो डिफरेंस, बात एक ही है। ओके, नाउ कंपैरिजन बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस। हमने कंपैरिजन किया एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस के दरमियान। ओके, नाउ इट इज माय हाउस, इट इज योर हाउस, ये आपका घर है। योर possessive adjective. Okay, it is your house. Okay, now it is a bus, it's a bus stop. Now you have to get to the bus stop. Okay, now you can see this passage, ये रास्ता देखें, from your house to the bus stop. Okay, it is shorter compared to second one के बामुकाबला पहला जो रास्ता क्या है, स्ट्रेट है और छोटा है। Okay, now when you have a look on the other path, अगला रास्ता देखें, the distance between your house and your bus stop is too much. Okay, longer than first one. long है, तवील है compared to short way. तो बताने का मकसद ये है कि when you write an active sentence and when you write a passive sentence, you see, आप देखेंगे कि in active sentence you use less words. एक्टिव सेंटेंस के अंदर कम लफ्ज इस्तेमाल होंगे। ओके, कंपेयर टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के अंदर ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल होंगे। अगर किसी एक्टिव सेंटेंस के अंदर एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है, पैसिव में दो यूज होंगे। आर यू गेटिंग मी? यू कैन सी द डिफरेंस। ओके, व्हाई इज दिस पाथ शॉर्टर एंड व्हाई इज दिस पाथ लॉन्गर? ये लॉन्गर क्यों है और एक्टिव शॉर्टर क्यों, पैसिव शॉर्टर क्यों है? वजह क्या है कि इन एन एक्टिव वॉइस where you use just singular auxiliary verb, जहां पर आप एक auxiliary helping verb यूज करते हैं। पैसिव के अंदर on the other hand you have to use two, आपने दो helping verb यूज करने। Are you getting me? Okay, अगर एक्टिव के अंदर अगर कोई भी, अगर एक्टिव सेंटेंस के अंदर अगर आप कोई helping verb यूज नहीं करते, पैसिव में एक यूज करना पड़ेगा। Okay, are you getting me? Okay, now in an active sentence where you use two auxiliaries. Okay, अगर एक्टिव में आप दो ऑक्सिलरी यूज करते हैं, पैसिव में तीन यूज करने पड़ेंगे। ओके, अगर पैसिव में, अगर एक्टिव में तीन यूज करते हैं, पैसिव में चार यूज करने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग मी? सो दैट्स व्हाई एक्टिव वॉइस इज अ शॉर्ट वे टू गेट टू द स्टॉप। ओके, ऑन द अदर हैंड पैसिव वे is a long way to get to the station पहुंचने के लिए। Okay, now it is the comparison between active voice and passive voice. Okay, now and how much which sentence is used I have told you already. पहले बता दिया कौन सा कितना यूज होता है। 60% पैसिव यूज होता है और 40% एक्टिव यूज होता है। अब मैं बोल रहा हूं, अगर आप तहकीक करें, गौर फिक्र करें मेरे बोलने के अंदाज पर, मसाइल जो पैसिव के बोले जा रहा हूं। Okay, now what's order? What's order? The arrangement of the words to make a sentence, active voice or passive voice बनाने के लिए। Okay, now today I will teach you people present simple, okay, active voice, passive voice, past simple, active voice, passive voice, future simple, active voice, passive voice, and I will also teach you people two structures, active voice and passive voice. Okay, it is the fundamental lecture on active and passive voice. एक्टिव पैसिव पे ये बुनियादी लेक्चर, अगर आप इस लेक्चर में क्वालिफाई कर जाते हैं, इफ यू गेन ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ओके, इन दिस लेक्चर, ओके,
you will get command on active passive usage in English language. आप मुकम्मल कमांड हासिल कर चुके होंगे कि एक्टिव पैसिव अंग्रेजी में कैसे इस्तेमाल करना है. Are you getting me? Okay, now people, let me tell you. Now you can see. Have a look. Present simple. Okay, now active passive voice. First of all, usage. When do we use active passive voice in a sentence? In the conversation. It's a question. सवाल ये है कि दुराने गुफ्तगू किस बुनियाद पर, किस वजह पर हमें एक्टिव पैसिव यूज करना है. एक्टिव क्यों यूज करना है, सवाल ये. पैसिव क्यों यूज करना है, सवाल ये. अगर हम एक्टिव यूज कर रहे हैं तो पैसिव वहां पे क्यों यूज नहीं कर सकते. अगर पैसिव का जुमला बोल रहे हैं तो वहां पर एक्टिव क्यों यूज नहीं कर सकते. इट्स अ क्वेश्चन. ओके, इस सवाल ये यूसेज, इस्तेमाल. लेट मी आंसर दिस क्यूरी. इस सवाल का जवाब क्या होगा. जवाब ये है कि व्हेन यू वांट टू मेंशन अ डूअर. ओके, doer means a performer of an action in a sentence. जुमले के अंदर काम सरंजाम देने वाला, हरकत करने वाला, किसी भी नोयत की हरकत क्यों ना हो, काम करने वाला जुमले के अंदर क्या है, doer है, performer है. Okay, so when you want to mention a doer, okay, an active sentence is used. दुराने गुफ्तगू, while making conversation, if you mention, okay, दुराने गुफ्तगू अगर आप ये जाहिर करना चाहते हैं, दुराने गुफ्तगू अगर आप ये बताना चाहते हैं कि काम किसने किया, बस में आ रही. फॉर एग्जाम्पल, यस्टरडे इन अवर एरिया, ओके, कल हमारे इलाके के अंदर एक कार लापता हो गई. क्या हो गई, हमारे एरिया में कल एक कार क्या हो गई, लापता हो गई, गुम हो गई. ओके, अब किसी ने चुराई है, ऐसा ही है. नाउ अगर आपने जुमले में मेंशन करना है कि कार किसने चुराई, फिर आप एक्टिव बोलोगे. क्या बोलोगे, एक्टिव सेंटेंस बोलोगे आप. अगर आपको पता नहीं कार किसने चोरी की है, ओके, आप यूं तो बोलोगे नहीं कि ये पड़ोस वाले मोहल्ले ने चोरी की है, यूं तो बोलोगे नहीं आप. कराची में कोई कार गुमा, बोलो लाहौर ने चोरी की है, लाहौर ने हमारी कराची की कार चुराई है, ऐसा तो बोलोगे नहीं आप. बस में आ रही है. हमें क्या पता, we don't know who has stolen our car. हमें नहीं पता कि हमारी कार किसने चोरी की है. बस मेरी. तो आप कहते हैं कि कल रात कार चोरी हो गई. क्या बोलेंगे, in the whole sentence, yesterday a car was stolen from the area. Yesterday a car was stolen. You see that in this whole sentence there's no pronoun, there's no pronoun, there's no person, there's no indication of any performer or doer. पर जुमले के अंदर कोई इंडिकेशन है ही नहीं है परफॉर्मर डूअर की. और सेंटेंस क्या है कि yesterday a car was stolen. Okay, yesterday a car was stolen. Yesterday at dinner, डिनर क्या टाइम है, डिनर क्या है, टाइम का नाम है. बस में आ रही है, खाने का नाम नहीं है, टाइम का नाम है डिनर. ब्रेकफास्ट क्या है, टाइम का नाम है. लंच क्या है, टाइम का नाम है. बस में आ रही है. yesterday at dinner biryani was cooked. In the whole sentence, there's no mother, there's no sister, there's no wife. He, she, no one is being called. जुमले में कोई भी नहीं है. Yesterday, biryani was cooked at dinner. Yesterday, biryani was cooked at dinner. The sentence is complete. The sentence is meaningful. जुमला क्या है, मानी खेज है, meaningful है, लेकिन there's no pronoun. Pronoun नहीं है ना. So when there's no pronoun in the sentence, but the sentence is complete. Okay. The sense is meaningful. That sentence is called passive voice. क्या है, passive voice. On the other hand, इसके बरक्स, when a sentence is complete, a sentence is meaningful, and that sentence also has a pronoun. Man, male, female, Sara, Ali, or any pronoun. The performer of an action. जुमले के अंदर काम कर, चोरी करने वाला, बिरयानी बनाने वाला अगर मौजूद है, वो जुमला एक्टिव वॉइस है. क्या है, एक्टिव वॉइस है. Are you getting me? So have a look on the definition. When you want to mention a doer, an active sentence is used. Okay, जब आपने परफॉर्मर को जाहिर करना है जुमले का, तो आपने एक्टिव जुमला यूज करना है. Okay, your mind is already trained to use these sentences. आपका दिमाग पहले से ट्रेन है ये सारे जुमले इस्तेमाल करने के लिए. Are you getting me? Because we know Urdu.
वी आर नॉट द डम पीपल, वी आर नॉट द डेफ पीपल, हम गूंगे बहरे नहीं है। ओके, वी नो उर्दू लैंग्वेज क्वाइट वेल, हमें उर्दू जुबान आती है। वी आर ऑलरेडी ट्रेंड पीपल फॉर द लैंग्वेज, हम पहले से अंग्रेजी के लिए, उर्दू के लिए ट्रेंड है। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात है, बस में आ रही है। एंड when you have to mention just the object, person, place और thing, जब आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट को मेंशन करना है, डूअर को मेंशन नहीं करना। कार चोरी हो गई, बिरयानी पक गई, अली को किडनैप कर लिया गया, पर्सन। जब आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट को क्या करना है, जाहिर करना है, परफॉर्मर को जाहिर नहीं करना। अब पैसिव सेंटेंस यूज्ड, वहां पैसिव यूज होगा। गॉट इट? एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? पीपल, you want to ask any question up till now? अभी तक कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए। I will do my best to answer you people. Okay. Otherwise, I'm going to carry on the lecture. Any question? Rohan, Arham, Usman, any question? No, sir. Okay, now have a look. What's order? What does it mean? It means how to arrange the words, okay, to make an active or passive sentence. लफ्जों कैसे अरेंज करें एक्टिव पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए? You can say grammar as well. Okay, now a present simple, past simple, future simple. Okay, I'm gonna teach you people these three tenses in active passive voice. Okay, by comparing. कंपैरिजन से पढ़ेंगे। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो बात जल्दी समझ में आती है। अम्मा कंपैरिजन करती हैं, उनको देखा वो पड़ोस वालों के क्या नाम है, खानदान के, तो वो लड़की कितने काम करती है, कंपैरिजन कर रही होती है अम्मी घर पे। ऐसा ही ना? आपने देखा क्या नाम है, वो तुम्हारा दोस्त कितनी अच्छी जॉब करता है, कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है, और तुम? ओके, यानी कि वी पीपल आर यूज्ड टू कंपेयरिंग पीपल। ओके, हम लोग क्या कंपेयर करने के आदी हैं। तो मैं भी क्या करूंगा, वही काम करूंगा, कंपैरिजन करूंगा। मैं एक जुमले का दूसरे जुमले से कंपैरिजन करूंगा ताकि बात अच्छी तरह समझ में आए, बात दिल को लगे। ठीक है, नाउ प्रेजेंट सिंपल हमें पहले से आता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट, बेस फॉर्म और प्रेजेंट टेंस फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ओके, इफ वी आर यूजिंग अ ट्रांसिटिव वर्ब तो ऑब्जेक्ट होगा, वरना ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन पैसिव के अंदर तो यकीनन हम यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब भी यूज करेंगे। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांसिटिव क्या होता है, पढ़ा चुका गुज़िश्ता लेक्चर्स के अंदर। ओके ना, सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म प्लस प्रेजेंट टेंस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके नाउ पैसिव की ग्रामर क्या है? पैसिव में क्या है? सब्जेक्ट, एम आर इज पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट सिंपल में स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सिंपल में क्या करेंगे, एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट आएगा, फिर बेस फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट आएगा, एम आर इज, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। बस मेरी अब सेंटेंस देखें। मैं कहता हूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ओके, इट्स माय रूटीन, आई टीच इंग्लिश। रिपीट द सेंटेंस, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। ओके, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। इन दिस सेंटेंस द डूअर इज मेंशन्ड, द परफॉर्मर इज प्रेजेंट इन द सेंटेंस। जुमले के अंदर जो डूअर, जो परफॉर्मर क्या मौजूद है, आई। ओके, द पर्सन हु इज स्पीकिंग, ओके, जो बंदा बात कर रहा है वो आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। नाउ यू हैव टू रिमूव द डूअर, परफॉर्मर ऑफ द सेंटेंस, ऑफ द एक्शन। जुमले में से एक्शन करने वाले को निकालो, अंग्रेजी पढ़ाई जाती। क्या हो जाएगा, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, पैसिव अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो आपने क्या करना है, इंग्लिश इज द सब्जेक्ट, इंग्लिश इज taught, बोले, it is the passive voice. Okay, when you have to mention the object, आपने ऑब्जेक्ट मेंशन करना है। बात समझ में आ रही है? तो इंग्लिश इज taught, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। द सेंटेंस इज मीनिंगफुल। ओके, द सेंटेंस इज कंप्लीट। ओके, द सेंटेंस इज प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल भी है, कंप्लीट भी है, मीनिंगफुल भी है। कमी है तो किसकी कमी है? काम करने वाले की कमी है, लेकिन वो कमियां महसूस नहीं हो रही। बात समझ में आ रही है? बिकॉज इन पाकिस्तान, बोले, इंग्लिश इज taught, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। इन पाकिस्तान इंग्लिश इज taught. Okay, so I teach English, it's my routine, I teach English.
Why do you teach English? आप अंग्रेजी क्यों पढ़ाते हैं? Because in Pakistan, English is taught at schools, colleges, universities. That's why I teach. पाकिस्तान में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है. It is passive voice. It is passive voice. Are you getting me? Okay, now move on. Now, people, you have to bear in mind present simple, active passive to understand past simple. Okay, now in present simple we use the base form. Okay, in past simple we use the past tense. I mean the second form of any verb. It could be state or action verb. Action or state हो, causative verb हो, जो भी verb हो, past simple के अंदर आपने past tense form यूज करनी है. अब आप बोले सर past tense form कहां से लेकर आएंगे? Okay, we have the books. Okay, we have the dictionaries. वहां से क्या करें? स्टडी करें, एक्सट्रैक्ट करें, प्रैक्टिस करें, याद करें, ताकि आपकी अंग्रेजी बेहतर हो. बस मेरी एवरीथिंग टेक्स एफर्ट्स, हर चीज मेहनत तलब करती है. ओके, सब्जेक्ट, पास्ट टेंस, ऑब्जेक्ट. सेंटेंस क्या है? उसने कल फोन चोरी किया. ओके, शी, ओके, शी स्टॉल अ फोन. स्टॉल, स्टील, स्टॉल, स्टॉलन. स्टील, स्टॉल, स्टॉलन. आर यू गेटिंग मी? मुझसे पूछे सर आपको कैसे पता कि स्टोल है? पास्ट टेंस फॉर्म स्टील की. ओके, फॉर एग्जांपल हादिया आस्क मी सर हाउ डू यू नो द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ स्टील इज स्टोल? हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता? सवाल करें मुझसे. हादिया, मेक दिस क्वेश्चन, हाउ डू यू नो द पास्ट टेंस ऑफ स्टील इज स्टोल? सवाल कीजिए. शर्जील आप सवाल करें कि हाउ डू यू नो सर द पास्ट टेंस ऑफ स्टील इज स्टोल? हाउ डू यू नो? Sir, how do you know the past second verb is stole? इज स्टील. आपको कैसे पता? मैंने याद किया हुआ है. बस मेरी जवाब क्या है? मैंने याद sir. किया हुआ है. कैसा जवाब? अप्रिशिएटेड. याद किया हुआ मैंने. Yes, क्या पता sir. चला? In order to learn something, we have to work hard. We have to make an effort. Okay. All right. Okay. Life is not the bed of roses. बस मेरी है. जिंदगी फूलों की सेज नहीं है. Okay. You have to make efforts in every field of life. जुबान सीखना भी जिंदगी का क्या हिस्सा है? Because your language is connected to your life. आपकी जिंदगी से वाबस्ता है. तो प्रैक्टिस करनी है. Okay, so steal, stole, stolen. So she stole a phone. Okay, now I mentioned the performer. Now, if I don't know, अगर मुझे नहीं पता कि who stole the phone, किसने फोन चोरी किया, मैं बोलूंगा कि a phone was stolen. फोन चोरी हो गया था. A phone was stolen. You can make a question, sir. You're teaching us the English language. Why do you speak Urdu? आप तो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, उर्दू क्यों बोलते हैं? Let me tell you, as per rule of linguistics, लसानियत का रूल है कि in order to teach the second language, you must use first language. First language इस्तेमाल करना पड़ेगी मुझे second language teach करने के लिए. Otherwise, it is going to be impossible. वरना नामुमकिन हो जाएगा पढ़ना और पढ़ाना, सीखना सिखाना. Okay, she stole a phone. Okay, उसने फोन चोरी किया. A phone was stolen. फोन चोरी हो गया. Subject. Then was verb. Then after was verb, the past participle. Okay, she stole a phone. Okay, now a phone was stolen. Phone चोरी हो गया. Now future simple. In future simple, active voice we use subject, will, then base form, then object. But in passive voice we use subject, will plus be, past participle. Are you getting me? Okay, now for example, she stole a phone. Okay, yesterday she stole a phone. Now, as a result, the police will arrest her. Him, मैंने him यहाँ पे लिखा, लेकिन her हो सकता है लड़की के लिए. The police will arrest him. Okay. Unconsciously, okay, unconsciously I wrote these both sentences. Okay, now the police will arrest him. Police उसे गिरफ्तार करेगी. Now, this him means, this him shows male or female. This him shows male or female? Male. Okay, now objective case में क्या him है, तो subjective case में क्या होगा? He क्या हो जाएगा? He हो जाएगा. अगर यहां पर them होता तो they हो जाएगा. Her होता तो
शी हो जाता, मी होता तो आई हो जाएगा, यू होता तो यू. ओके, नाउ द पुलिस विल अरेस्ट हिम. द डूअर इज पुलिस, परफॉर्मर है, काम क्या, अरेस्ट, टू अरेस्ट. द पुलिस विल अरेस्ट हिम, पुलिस इसको अरेस्ट करेगी, उसे अरेस्ट किया जाएगा. ही विल बी अरेस्टेड, बोले, से ही विल बी अरेस्टेड, बोले, ही विल बी अरेस्टेड. आर गेटिंग मी? द पुलिस विल अरेस्ट हिम, पुलिस को गिरफ्तार करेगी. ही विल बी अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार किया जाएगा. ओके, इट इज ऑल क्लियर. द पुलिस विल डू दैट, पुलिस ये काम करेगी. मैं तो किसी को अरेस्ट कर नहीं सकता, बस मेरी घर बैठे बैठे हम किसी को अरेस्ट करने लगे. It's impossible, okay, because the police has the authority to arrest anyone. Okay, this authority belongs to police only. It does not belong to you. आपके पास इख्तियार नहीं किसी को अरेस्ट करने का. Okay, so the police will arrest him, so he will be arrested. So when you do not want to mention the doer performer, you have a choice to use passive voice in English language. अगर आप सीक्रेट रखना चाहते हो काम किसने किया, तो आपने क्या करना है, पैसिव वॉइस यूज करना है. यहाँ पे ही यूज हो रहा है, प्रोनाउन आउट हो रहा है, तो पैसिव कैसे हो गया? यहाँ पे ही इस्तेमाल हो रहा है, बट इट इज नॉट द परफॉर्मर. ये परफॉर्मर नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है जिसको जेल ले जाया जा रहा है. ये जेल ले जाने वाला नहीं है, जेल ले जाने वाला परफॉर्मर है, जेल जाने वाला परफॉर्मर नहीं है, ऑब्जेक्ट है. बस में आ रही है? सो द पुलिस विल अरेस्ट हिम, सो ही विल बी अरेस्टेड. आर यू गेटिंग मी? Up to now in question. Just after 5 minutes, I will write a lot of sentences on the board with the help of you people. आपकी मदद से मैं बहुत से जुमले बोर्ड पे लिखूंगा. Right now, do you want to ask any question? Present, past, future, active, passive voice. Do you people want to ask, make any query? कोई सवाल करना चाह रहे हैं? Mohammed Zubair, Mr. Hassan is absent today. Tuba Murad, Mama Yunus, Maria, Hadia Aurangzeb, people, do you want to ask any query? कोई सवाल अभी तक? सर, Yes. इसका मतलब है पैसिव वॉइस जो होता है, इसमें अगर पास्ट हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, इसमें पास्ट पार्टिसिपल होगा, यानी थर्ड फॉर्म होगा ना. It is a rule. It is a rule. Yes. Okay. Whatever the tense is, जो भी tense हो, main verb के अंदर we have to use just the past participle form. Okay, it is a rule. Yes, okay, now sir. move on. Now class, have a look on this structure. Okay, now a structure. Now subject have to plus base form plus object. Okay, this structure we use when we have talk about our obligation, responsibility. जब हमने जिम्मेदारी की बात करनी है, तब आपने ये स्ट्रक्चर यूज करना है. राइट नाउ जस्ट आई वांट टू टेल यू पीपल अबाउट द पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस. ठीक है, अगर स्ट्रक्चर ज्यादा आपको क्लियर ना हो, नो प्रॉब्लम. ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके, वी लर्न अबाउट इट. बाय द वे, जिम्मेदारी की बात करने के लिए मैं कहता हूं कि कोई काम आपने करना है, आपकी जिम्मेदारी है. ओके, मैं कहता हूं कि उन्होंने कार खरीदनी है, मैं बोलूंगा दे हैव टू बाय अ कार. बोले they have to buy a car, उन्होंने कार खरीदनी है. Now this sentence can be made in passive voice. passive में जुमला कैसे बनेगा? A car subject, a car have or has, to be यहां पे ऐड करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे. A car has to be bought. बोले कार खरीदी जानी है, उन्होंने कार खरीदनी है, कार खरीदी जानी है. They have to buy a car. बोले a car has to be bought. बोले it is a passive voice. In upcoming lectures, okay, you'll be able to use these structures fluently, but right now just have a look on active and passive voice. Focus करें कि how to use active and passive voice. Okay, they have to buy a car, so a car has to be bought. Okay, because we have to erase the doer. doer के निकालना है तो passive बन जाएगा. Okay, now next structure, subject going to plus base form. Are you going? See you tomorrow. Subject going to plus base form plus object. Okay, now the passive voice, subject going to plus be plus past participle. Are you getting me? Boss is going to, for example, Usman yesterday had a day off. Okay, and the boss went angry.
बॉस नाराज हो गया, कल उस्मान ने छुट्टी की, तो मैं कहता हूं कि बॉस इज गोइंग टू फायर यू, बॉस आपको जॉब से निकालने लगे। ओके, बॉस इज गोइंग टू फायर यू। पैसिव वॉइस के अंदर बॉस को निकाल दो, मैं कहता हूं आपको जॉब से निकाला जा रहा है। आर गेटिंग मी? ओके, सो बॉस इज गोइंग टू फायर यू। इन द पैसिव वॉइस यू इज गोइंग टू बी द सब्जेक्ट, यू आर गोइंग टू बी फायर्ड। बोले मैं आपको पढ़ाने लगा हूं, आई एम गोइंग टू टीच यू। बोले आपको पढ़ाया जाने लगा, यू आर गोइंग टू बी टॉट। बोले आर यू गेटिंग मी? ओके, so that's how we speak active and passive voice. Okay, now people up till now any question? Abhi tak ke lecture mein people any question you can ask me. Okay, now class, have a look on this chart, all in one chart. Okay, this chart has all the structures, active voice, passive voice. Okay, at home you have to go through this, घर बैठ के आपने इसकी प्रैक्टिस करनी। Okay, now tenses, all the tenses, present simple, present progressive, present perfect, present perfect progressive, and all the 12 sentences, okay, are written over here. Active voice, passive voice. Okay, you have to study sitting at home, घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस करेंगे। Right now we're gonna make some examples on the board. Okay, now have a look. I'm gonna use the structure, okay, have plus infinitive for obligation, for responsibility, okay, जिम्मेदारी के लिए। ऐसे मैं कहता हूं आपने, मैं कहता हूं you have to do the homework. Okay, आपने होमवर्क करना है, you have to do the homework right on time. Okay, it's your obligation, it's your responsibility, you have to do the work right on time. Okay, now convert this into passive voice. Now the homework, okay, has, because homework is something, so with something we use has, with I, you, we, they, we use have. I have, you have, we have, they have, Umar and Ali have. With singular name, the homework has. Okay, now the homework has to be, you have to add be. After be, we use past participle. We know that in passive voice we just use past participle. Are you getting me? So the homework has to be done right on time. होमवर्क तो वक्त पे होना है, होमवर्क वक्त पे होना है। एक बात बता दूं मैं, ओके, द होमवर्क हैज टू बी डन राइट ऑन टाइम। ओके, नाउ about future planning, फ्यूचर प्लानिंग के लिए गोइंग टू इस्तेमाल करते हैं, बात समझ में आ रही? ओके, अबाउट फ्यूचर प्लानिंग। ओके, नाउ मैं कहता हूं कि we are going to make arrangements. We're going to make arrangements. Are you getting me? Okay, for a party. Okay, हम इंतजामात करने जा रहे हैं पार्टी के लिए। We are going to make arrangements for a party. Are you getting me? Now the arrangements are okay, going to be, the arrangements are going to be made for a party. इंतजामात पार्टी के लिए होने जा रहे हैं, पार्टी के लिए इंतजामात होने जा रहे हैं। इस जुमले को देखें और हम इंतजामात करने लगे इस जुमले को देखें। Are you getting me? So the arrangements are going to be made for a party. So that's how we use active and passive voice. In upcoming classes, okay, we're going to practice, okay, individually
First of all, responsibility, active passive voice. Okay. Then about future planning, then present simple, future simple, past simple, and so on. Got it? अभी तक के lecture में any question you can ask me, okay, so that I can answer you. The exercise, okay, is going to be shared with you people at the WhatsApp or via email. Okay. For any curious question you can ask via email or on the website, okay, or via SMS in the WhatsApp. You'll be responded. Any question, query, please ask me. No question. Good. Okay, people. I'll see you tomorrow.